Hello friends, welcome once again. In today's video, we'll talk on a topic called stimulus response mismatch. What does it mean is what is presented to you in the form of the stimulus and what do you respond? There has to be a correlation between them. When the correlation is missing, it is called stimulus response mismatch. There can be many reasons for such mismatch, but today we will take one reason, that is poor observational skill and poor analytical skills, because of which it leads to stimulus response mismatch. Now this what I'm going to speak is also an official reason out of the many reasons. Point number 2a, low assimilation skill. Point number D, preconceived notion. Point number E can be low IQ. Point number F is lack of basic analytical skills. Point number H, low perception. And point number I is lack of imagination. So there can be multiple reasons because of which the stimulus response mismatch comes. Today we will take poor observational and analytical skills जिसके कारण leading to a stimulus response mismatch. So we'll take this picture. So if you observe this picture, you can see there is a lady who is sitting on a office chair. There is a telephone in front of her. There's a pen stand. She's wearing a sari, and she's probably speaking to somebody, a young person who is in coat and trousers. He is carrying a briefcase, and he's standing in front of the table. Adjacent to him, to his left, you can see a board which writes Managing Director. On the other side of the lady, you can see on the wall there are files arranged, and there is a door with a circle, glass thing through which you can look inside. So this is what is shown, and this is the candidate who is supposed to observe it. So this picture you will observe using your eyes, and this information will be processed by your mind. So that's a whole process. So observation and perception, this happens inside. So let's read a story of a candidate who was there for the online psych test assessment, and we'll see what has he written and what is his interpretation and how is it correlated with the picture. I will also suggest you to write a story on this picture so that we know कि आपके मन में क्या आ रहा है before we go over the video further. So let's see a response on this picture by a candidate. So he says Santosh was an entrepreneur. So Santosh was an entrepreneur. What does an entrepreneur mean? Somebody who runs his own business or whatever. One day he visited a garment company's managing director's office. So one day Santosh, who himself is an entrepreneur, visits a garment company's managing director's office because the managing director board was there. So he connected that. He asked from receptionist. So the lady has come, she is a receptionist, took appointment and met him. So probably he would have taken the appointment prior. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि immediately लिया, but whichever way, he takes an appointment and meets him. The purpose of his meeting is not clear so far, but it is clear that he is an entrepreneur, takes an appointment from the through the receptionist for the meeting the MD, goes and meets. Next, see what happens. He requested MD to invest in his startup. So this entrepreneur Santosh is running a startup, and he requests the MD to invest money in his startup. Now, what is a startup? Of making PPE kit and face masks. So his startup is making this medical kit, PPE kit, personal protection kit, जो कोविड में यूज होता था, डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, and face mask, the mask that we wear, this kind, है ना, इस तरह के जो मास्क हम पहनते हैं, उसका entrepreneur है, he's a startup है, and he requests the MD to invest money in it. Face mask to cover the rising demands due to COVID. So because of the COVID, there's rising demand of PPE kit in the hospitals by doctors and paramedics, and the face mask both for the hospitals and for the general public. So iska demand ko meet karne ke liye he started a startup, and he demands the MD to invest money. Makes sense. He also laid out his plan of
execution with 50% of workforce, something, I don't know, it's not, the word is not clear, this word is not clear, but that's okay. So he also says it's a 50% reduction or whatever, he says something. So MD liked this idea, the managing director liked this idea and did agreement. So both of them had an MOU. So the MD said ki we will invest money in your startup. Santosh used it to expand production. So Santosh was already a small startup. With this investment, he expanded it. So large number of PP kit production and large number of mass production. And soon the startup started developing. So it started generating a lot of profit because of PP kit selling and mass. Santosh was happy to contribute in India's fight against COVID. So Santosh personally was very happy that he has been an instrumental person in the India's fight against COVID in terms of providing this PP kit and mask. So that's a story on this picture. Now I wanted to pause this video and spend 1 or 2 lines to explain, is there any logical problem in this story that is written on the given picture. So I will request you to read it once again and see if there is any logical flaw in this. Reasoning का कोई गलती है तो I will request you to first pause the video, write it in the comment box and then continue the video and I'll explain what needs to be observed. Okay, fine. So if you have written your comment, continue the video. Now Santosh was an entrepreneur and he comes to this office, garment company's managing director's office, with the intention to make PP kit. This is the PP kit and face mask. And the reason for this is because of the increasing demand for these things due to the COVID situation. But the thing to be observed is Santosh himself, the receptionist and probably the managing director inside are themselves not wearing the mask. आपको अगर कोविड-1 के लॉकडाउन का याद होगा, it was so strict कि आप बिना मास्क बाहर नहीं जा सकते and he is moving in offices as if there was no COVID, whereas he is a startup who is making PPE kit and mask, whereas he himself is not covering and the lady is also not covering. And then what is the point of creating PPE kit and mask when you are yourself not following it? I don't know whether got it. So I asked this boy for the logic and he said, sir, ये तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं. मैंने कहा इसमें ध्यान देने की तो बात ही नहीं है. Because you created a startup where Santosh was creating PPE kit and bow, but you were not intelligent enough to understand कि COVID restrictions के time में protocols के मुताबिक even today you wearing a mask is mandatory. अब तो थोड़ा सा लिबरल हो गया बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव ओवर एंड द थर्ड वेव का चांस खत्म हो गया एंड द न्यू वायरेंट इज नॉट वेरी, वो तो लोग थोड़ा सा हल्के हो गए. बट द राइज ऑफ दिस पीपी किट डिमांड वाज वेरी हाई पोस्ट कोविड-1 लॉकडाउन 1 के टाइम में. तो लॉजिक पूछा तो बोला सर ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया. मैंने कहा देना था. सो द पॉइंट इज कि इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर एंड दिस स्टोरी, दिस पिक्चर शुड बी लाइक दिस. Pay attention to the picture. The girl should be wearing the mask and this person who has come should be wearing the mask. Only then he should come and talk about COVID protocol and lockdown and all that. So ये गड़बड़ हो गया. तो ये गड़बड़ क्या लिखने में गड़बड़ हुआ, सोचने में गड़बड़ हुआ, ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ हुआ, एनालिसिस में गड़बड़ हुआ, आप मुझे बताना. कुल मिला के साई कैसे बोलेगा? पुअर रीजनिंग स्किल्स, तर्क शक्ति, पुअर तर्क शक्ति. एंड रीजनिंग एबिलिटी को आपको पता है इट्स द मदर ऑफ ऑल OLQ, जो कि सेकेंड OLQ एंड फैक्टर 1 का. एंड रीड्स द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ग्रास्प द एसेंशियल वेल एंड टू अराइव एट कंक्लूजन बाय रैशनल थिंकिंग. तो इस कैंडिडेट ने संतोष को एक एंटरप्रेन्योर बनाया, मान लिया. संतोष को एक MD से मिलने के लिए आया, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी मान लिया. लेकिन जिस काम से आया था वो काम था PP किट और मास्क बनाने का, बिकॉज ऑफ द राइजिंग डिमांड्स ड्यू टू कोविड. यानी कि कोविड के दौरान में आया और अब खुद मास्क नहीं पहन रहा. सो ये कहानी इस तरह से होना चाहिए था, पिक्चर. लेकिन पिक्चर इस तरह का नहीं है, लेकिन स्टोरी उस तरह का. सो
इसका सेकंड पार्ट है रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स रिसेप्टिविटी, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड सीइंग एसेंशियल्स ऑफ ए प्रॉब्लम। तो आपने इस पिक्चर को देख के जो एलिमेंट्स को रिसीव ठीक नहीं किया, आपका इंक्वायरिंग एटीट्यूड गलत है, अदरवाइज आपने बिना मास की बंदी और बिना मास के बंदे को इस तरह का नहीं बनाना था स्टोरी। सो इसके अंदर मिसमैच आ गया। आपका लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स डाउन, अदरवाइज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ये जो लड़के ने लिखा है वो 4 बार ऐसे SSB गया, चारों बार कॉन्फ्रेंस आउट है, 4 बार है जो भी है। एंड सीइंग एसेंशियल्स ऑफ ए प्रॉब्लम, सो यू आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एन MD ऑफ ए गवर्नमेंट कंट्री, एंड वो इन्वेस्टमेंट किस लिए करवाना चाहते हो? PP किट एंड मास्क में, बिकॉज इसका राइजिंग डिमांड है, बट योरसेल्फ इज नॉट वेयरिंग। तो ये कैसे आपने इस कंक्लूजन पे आए? यहाँ पे एक लॉजिकल मिस्टेक हुआ है। सो क्या ये पिक्चर, दिस इज द स्टिमुलस प्रेजेंटेड, बट आपका जो स्टोरी था वो स्टोरी कुछ इस पिक्चर के ऊपर आया है। व्हेन एवरीबॉडी इज कोविड में तो खैर ऑफिस भी बंद थे, बट यहाँ पे चलो मान लिया फॉर सम रीज़न खुला हुआ क्योंकि मास्क बनाते थे। तो क्या ये पिक्चर इज इक्वल टू ये पिक्चर? मेरी समझ में नो। The given picture is the first one, the story is based on the second picture. They are not matching. So इसलिए ये हो गया stimulus response mismatch, और इसे आपको ठीक करना पड़ेगा। और इसको ठीक करने के लिए ये पिक्चर जो इनपुट हुआ आँखों से, वहीं पे ऑब्जर्वेशन स्किल में गड़बड़ हो गया, और यहाँ पे परसेप्शन में गड़बड़ हो गया, परसेप्शन में एंड एनालिटिकल स्किल्स में, क्योंकि आपने विश्लेषण नहीं किया, आपने ऐसे ही कुछ भी बढ़ा दिया। तो मुझे बताना है इससे क्या समझ में आया। एंड इस तरह के इसको अवॉइड करने के लिए यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली, बिकॉज इफ यू डोंट ऑब्जर्व केयरफुली बहुत गलतियाँ होती है, बिकॉज आप स्टोरी बनाने के चक्कर में इस तरह की गलतियाँ करते हो। नाउ प्लीज़ पुट अ कमेंट कि आपको क्या समझ में आया। मैं इसी पिक्चर के ऊपर एक और स्टोरी दिखाऊंगा, अगेन बाय अनदर कैंडिडेट हु इज़ ऑन साइट टेस्ट असेसमेंट करंटली ऑनलाइन, एंड उस स्टोरी को भी मैं पढ़ूंगा, बट उसको मैं एनालाइज नहीं करूँगा, आई जस्ट रीड इट इसी पिक्चर के ऊपर, और आप उस पर कमेंट बताओगे कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है या वो ठीक है। सो पिक्चर में क्या दिख रहा है? देयर इज़ अ लेडी who is a receptionist, it's sitting, there's a young man in coat trouser and हाथ में ब्रीफ केस है, नो मास्क, सो मास्क की स्टोरी नहीं है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर का बोर्ड लगा हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट डज ही राइट। इसके ऊपर कमेंट्स आप बोलोगे। अमनदीप अप्लाइड फॉर ए जॉब इन ए कंपनी। सो अमनदीप अप्लाइड फॉर ए जॉब इन ए कंपनी and appeared for its interview. After a few days, when he got the result, he saw that he was not selected. So Amandeep decided to prepare well in a strategic manner for his next interview round. Amandeep wrote down all the things that needs to be acted upon. Amandeep revised all his study material which was needed for job. He also worked upon his communication skills. Also did many mock interviews and started to read history of company for which he was applying for. After doing this, Amandeep appeared for interview, and this time he was selected for the job. So in the given picture, Amandeep first time non-recommended from the interview, second time he does lot of things that is written there, and finally he got selected. पिक्चर ये दिया है, और पिक्चर में पूछा व्हाट लेड टू द सिचुएशन, एंड पूरे पिक्चर में अमनदीप का इंटरव्यू के बारे में बताया। तो मुझे बताना क्या ये स्टोरी और ये पिक्चर मैच हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कैसे, नहीं हो रहा तो कैसे, क्या इसमें इस लेडी और इस बंदे का कन्वर्जेशन का रेफरेंस आया हुआ है। मुझे इसके ऊपर कमेंट बताना, और बताना अगर आपको इसके ऊपर टिप्पणी देना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, और क्या आप भी ऐसे मिस्टेक्स करते हो। अगर इसमें कोई मिस्टेक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे फीडबैक बताना। सो टेल मी इस वीडियो से क्या समझ में आया। सो आपका कमेंट ज़रूर बताना, उसके ऊपर हम इसको दोबारा लेंगे, एंड वी विल डिस्कस कि इसको कैसे ठीक करना है। नाउ फ्रेश AFOSOP ऑफलाइन बैच स्टार्ट्स एवरी मंडे, एक आज से शुरू हुआ है। नेक्स्ट बैच इज़ ऑन 20th December 2021
और उसके बाद वाला है 27 December 2021. Those of you wish to register, you can contact me. एंड इसमें आपके पास 2 weeks का सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप विच इज़ द फाउंडेशन कोर्स उसका ऑप्शन है, 2 weeks का SSB विच इज़ ऑप्शन 2 एंड ए कॉम्पोजिट बैच विच इज़ 2 weeks and 4 weeks का डिटेल आप मुझे when you ask me, I'll share you the details. These classes are conducted at Pune. The institute ka name is Academy for Life Skills Development. You can search for it in the Google map, and these are the 2 numbers on which you can contact if you need any assistance or even for booking the PG. To register, you have to WhatsApp me at 8275577650. I'll get back with the details. So do let me know what did you understand from this video, and do post your comment, and those who wish to join, WhatsApp me at 8275577650. और इसी तरह के और ज़्यादा वीडियोस के लिए अपने कमेंट्स को डालो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, and I'll get back to you with more videos of these lines, and these needs to be corrected if you're seriously wanting to get into the armed forces. Thank you, and may God